Good evening, friends. Once again, we are back with DNA, and once again, the excitement for DNA is back here. मैं तो एक week I was not there in Kolkata, so चलिए फिर से आज का एक interesting topic, very current and recent topic, cooling the temperatures, right? अभी हमें पता है कि the relationship between US, China and Taiwan, ये relationship अभी थोड़ा तनाव में है, right? There's a strain which is being evident in this relationship. The US, China and Taiwan are left picking up the pieces after Nancy Pelosi's visit, right? Nancy Pelosi US House Speaker हैं, right? And उनका visit बहुत सालों के बाद, 25 सालों के बाद ताइवान में हुआ था, और उसी को लेके एक चाइना ने अपना एग्रेसिव स्टांस दिखाए हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज अ स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड यूएसए. ऐसे तो प्रॉब्लम चल ही रहा था, तो ये नैन्सी पेलोसी का विजिट उसको एक डिफरेंट मात्रा दे दिया है. लेफ्ट पिकिंग अप, ये एक ईडियम है, left picking up the pieces. Left picking up the pieces means to collect the strained relationship together. That the 4-day military exercises conducted by China in the waters and airspace surrounding Taiwan concluded on 7th August without incident come as a relief to the region. क्या हुआ, ये नैन्सी पेलोसी जो ताइवान पहुंच गई रात को, तो चाइना को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चाइना ताइवान को भी किसी तरह ऑक्यूपाई करने का कोशिश में लगे हुए हैं. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ताकत दिखाने के लिए उन्होंने 4 दिन का एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया, जहां पर उन्होंने मिसाइल फेंका जापान में, राइट? और ये सब करके मतलब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दिखाया कि देखिए यहाँ पर ज्यादा यूएसए को ये बोलने के लिए इनडायरेक्टली ये बोलना चाहा कि यहाँ पर आप अगर ताइवान को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो हम
यहाँ पर युद्ध भी लगा सकते हैं. The drills saw the Chinese military not only cross the median of the Taiwan Strait but fire conventional missiles above Taiwan. जो मैंने बताया, conventional means traditional. Conventional missiles above Taiwan, aggressive acts that could have easily led to unintended escalation. Escalation means surprise. तो अननेसेसरी वहां पर एक युद्ध का परिस्थिति शायद पैदा हो सकता था. That they did not lead to any incidents is credit to the sober response from Taiwan's military. Sober means soft. नहीं तो टेम्पर्ड. शुक्र है कि चाइना ने ये जो अग्रेसिवली मिसाइल फेंका, उसमें ताइवानीज मिलिट्री जो हैं उन्होंने वो भड़के नहीं और वो अपना रिस्पॉन्स बहुत सॉफ्ट रखा. विच सेड इट मॉनिटर्ड चाइनाज एक्सरसाइजेस, सम ऑफ विच वर हेल्ड विद इन 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ ताइवान. चाइना इतना नजदीक पहुंच गए थे कि 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि समुद्र के ऊपर जो डिस्टेंस मापा जाता है वो नॉटिकल माइल्स के हिसाब से मापा जाता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गए थे. और ताइवान मिलिट्री क्या कर रहे थे, वो सिर्फ उनको वो कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे कि आगे ये क्या करने वाले हैं. बट चूज टू नीदर इंगेज चाइनीज एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप्स नॉर शूट डाउन मिसाइल्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तरफ से पलटा जवाब देने में अपने को रोक के रखा. राइट, अपने तरफ से पलटा जवाब देने में अपने को रोक के रखा. और इसीलिए ये चीज, जो कि चाइना ने मिसाइल फायर किया है, मगर उसके बावजूद भी ताइवान उसको काउंटर नहीं किया, इसीलिए वो आगे और नहीं बढ़ पाए. और वो जो एग्रेशन चाइना ने दिखाए, राइट, जो युद्ध वाला परिस्थिति वो कोशिश कर रहे थे और भी बढ़ाने का, वो चीज सिमट गया. राइट, इफ द ड्रिल्स वर सर्टेनली प्रोवोकेटिव. राइट, provocative means to create a situation where someone can get angry. Right. China's justification as that they were a needed response to draw a line after what Beijing has seen as needless American provocation that triggered this entire crisis. चाइना बोल रहे थे कि ये हमने किया है जवाब देने के लिए. राइट, क्योंकि अमेरिका ताइवान में आके इस एरिया का, ताइवान चाइना का जो एरिया है, वहां पर वो मतलब सिचुएशन में और भी ज्यादा टेंशन डाल रहे हैं. दैट ट्रिगर्ड दिस एंटायर क्राइसिस. अमेरिका को ताइवान में आने का कोई जरूरत नहीं था. अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसा ही होता है, जहां पर कोई एक कंट्री अपना पावर किसी और कंट्री के ऊपर चलाने के लिए कोशिश करते हैं, तो कोई दूसरा उन्हीं के जैसा या उनसे ज्यादा पावर जो है वो आके उस कंट्री में शामिल हो जाते हैं, उसको बचाने का कोशिश करते हैं. तो तब इनके लिए वो एक मतलब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना. तो इसीलिए चाइना ने बोला कि हमने जो किया है ठीक किया है, अमेरिका को वहां आना नहीं चाहिए था, अमेरिका जो किया है तो हमने इसीलिए अपना औकात दिखाया. द August 3rd visit of US House Speaker Nancy Pelosi to Taiwan
the first such high-level engagement in 25 years, 25 साल में, the first such engagement in 25 years. 25 साल के बीच में कोई भी अमेरिकन लीडर ताइवान नहीं आए थे. Was in China's view further evidence of Washington's hollowing out its commitment to a one China policy. Right, hollowing out means not keeping commitment. Hollowing out its commitment to a one China policy. One China policy जो है जिसमें चाइनीज एरियाज में ये लोग कोई अग्रेशन को बढ़ावा नहीं देंगे और कोई अग्रेशन को यहाँ पर काम करने नहीं देंगे. राइट. सो हमारा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो है आज का, राइट, इस फर्स्ट पैराग्राफ से हमें इसका समरी कैसे करेंगे. बेसिकली एक इंटरनेशनल पॉलिसी को ऊपर ये पैराग्राफ है. राइट. और ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसको लेके हमारा ये पैराग्राफ है. ओके, बिटवीन चाइना, ताइवान एंड यूएसए. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का समरी क्या होना चाहिए. आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इस टाइप का इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो आर्टिकल्स होते हैं उससे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेजेस आता है. राइट. तो आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है और आइडिया भी रखना है. राइट. तो इसमें हम समरी लिख सकते हैं. चाइना conducted an aggressive military exercise around Taiwan which included Chinese warships moving close to Taiwanese territory and firing of missiles This was in protest to the US House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan This visit to China was
assumed by the Chinese authorities as America's dishonor to One China policy. राइट, तो ये हमारा समरी था फर्स्ट पैराग्राफ का. चाइना कंडक्टेड एन एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान which included Chinese warships moving close to Taiwanese territory and firing of missiles. This was in protest to the US House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan. This visit to China was assumed by the Chinese authorities as America's dishonor to One China policy. ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं देखते हैं. As the dust settles, now it is difficult to see what all three parties, that US, Taiwan and China, will ultimately gain from a visit that appears to have been driven more by Ms. Pelosi's political inclinations than any well-considered long-term strategic objectives. So अभी हवा शांत हो रहा है, right? धूल फिर मिट्टी में जम रहा है. It is difficult to see what all three parties, the US, Taiwan and China, will ultimately gain from a visit that appears to have been driven more by Ms. Pelosi's political inclinations than any well-considered long-term strategic objectives. Right? ये जो चाइना का, ये यूएस का विजिट है, राइट, ये यूएस का विजिट एक्चुअली आगे क्या करेगा, इससे कोई फायदा होगा क्या ताइवान का, राइट? लग तो रहा है नहीं होगा. एंड इंक्लिनेशन मीन्स इंटरेस्ट. Right, so to have driven more by Ms. Pelosi's political inclinations than any well-considered long-term strategic objective. ये उनका अमेरिका का राजनीति है, right? और इसमें कोई long-term strategic objective है. It's thus not hard to see why even US President Joe Biden and the US military had cautioned against a trip that brings no lasting strategic benefits for Washington. Right. So, US President ने US military को caution किया था कि इस ट्रिप को मत करवाइए क्योंकि इसमें कोई long term strategic benefit Washington का होगा नहीं. For Taiwan's 23 million people and President Tsai Ing-wen, the rare high-profile foreign visit was no doubt welcome in the face of increasing global isolation on account of China's pressure. Right? ये जो visit था, right? 23 million people, and for President Tsai Ing-wen, the rare high-profile foreign visit was no doubt welcome in the face of increasing global isolation on account of China's pressure. China is being globally isolated, right? तो इसीलिए वो प्रेशर जो है वो चाइना के ऊपर अभी बढ़ रहा है. That short-term benefits may, however, be offset by the fact that Ms. Pelosi has arguably left Taiwan with a far worse strategic environment. इसमें short-term benefit एक ही चीज हुआ है कि पेलोसी आने के बाद से ताइवान को चाइना और भी बुरी नजर से देखना शुरू कर दिए हैं,
राइट। और उनका स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जो है, उनका आजू बाजू जो है, अगल बगल जो है, वो अभी और भी बुरा हो जाएगा। ये चाइना उनके पीछे और हाथ धो के लग पड़े। China's military has indicated its action have now heralded a new normal in military activity. Right. China's military has indicated its actions have now heralded a new normal in military activity across the Taiwan Strait, bringing it even closer to Taiwan shores. यानी ताइवान के वहां पर जो पतला सा समुंदर का वो जगह है जिसको स्ट्रेट बोलता है, अभी चाइना का वहां पर मिलिट्री एक्टिविटी और बढ़ेगा, क्योंकि वो भड़क गए हैं अभी, राइट, इन्होंने उनको बिगाड़े हैं। बीजिंग एंड वॉशिंगटन मीनवाइल आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस ऑफ एन ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। अभी चाइना के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप ये कोविड के वजह से और कुछ दो एक चीजों के वजह से और बुरा हो गया है, राइट। और ये रिलेशनशिप में अभी और भी मतलब घाव आएगा, राइट। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है एंड नाउ टेटरिंग ऑन द एज ऑफ एन एबिस, राइट, टेटरिंग ऑन द एज ऑफ एन एबिस। टेटरिंग मतलब to walk on weak legs. Abyss is bottomless depth. The focus must now turn to cooling the temperatures. अभी परिस्थिति को शांत करने का कोशिश में लगना चाहिए। Doing so will be easier said than done. कहना आसान है, करना मुश्किल है। With low levels of trust between the world's two biggest powers. आज की डेट में चाइना और यूएस दुनिया का दो सबसे शक्तिशाली देश हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर आपसी भाईचारा नहीं है और दोनों के बीच में तनाव बढ़ते जा रहे हैं, तो वो तो एक मुश्किल का चीज है। इन रिस्पॉन्स टू मिस पेलोसी's visit, Beijing last week said it will cut off military channels with Washington by cancelling 3 key dialogue mechanisms, that too at a time of heightened military tensions. जो वॉशिंगटन यानी यूएस के कैपिटल के साथ उनका एक जो ट्रीटी साइन होने वाला था, मिलिट्री चैनल जो एक दूसरे को वेपन सप्लाई, वो काट देंगे ये। वो इसको काट देंगे। The same may be said of relations between nations. They should not be hostage to personal ambitions of politicians. यानी अभी के समय में ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए जहां पर कि कोई एक पॉलिटिशियन का कोई अपना कोई इच्छा है वो पूरा करने के लिए वो कोई एक देश में चले जाते हैं, राइट, और उस देश में जाके वो बाकी सब एरियाज का, बाकी सब देशों का तनाव बढ़ा देते हैं, राइट। इंटरनेशनल रिलेशन को दोनों शक्तिशाली देश के बीच में वो खराब करते हैं। ये चीज अभी के माहौल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर यूएसए और चाइना के बीच में सिचुएशन और खराब होते गया, फ्रिक्शन और बढ़ते गया, तो इसका असर पूरा दुनिया के ऊपर आएगा। आज देखो चाइना जो है, इसको दुनिया के बाकी बहुत सारे कंट्री अभी इसको आइसोलेट किया है, तो इसके वजह से क्या हुआ है, वर्ल्ड का जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैकेनिज्म था, जो सामान इस देश से उस देश में जाना, टेक्नोलॉजी, ये सब सारे चीज क्या हुआ है, इसमें वार पड़ा है। क्योंकि आज की डेट में दुनिया का जो सप्लाई चेन का मेन सोर्स है वो चाइना है। आज सब चीज चाइना में बनता है, तो और दुनिया के चारों ओर वो जाता है, फैलता है, राइट। उस जगह पे अगर हमारे देश में ये चीज, मतलब आज पूरा दुनिया में अगर ये चीज गड़बड़ हो जाता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा।
राइट। सो देखते हैं हमारा ये इसका समरी, सेकंड जो ये है पैराग्राफ, इसका समरी हम कैसे कर सकते हैं। The visit of Nancy Pelosi didn't serve any long-term political or geostrategic objective in Taiwan. Rather, this short-term political objective has left Taiwan in a more disturbed strategic and military environment. The focus now should be to restore, यानी दोबारा वापस लाना, the relationship because China is furious and has already cancelled military deal with US. So the visit of Nancy Pelosi didn't serve any long-term political or geostrategic objectives in Taiwan. Rather, the short-term political objective has left Taiwan in a more disturbed strategic and military environment. Taiwan के लिए ये एक बहुत कचरा हो गया. The focus now should be to restore the relationship between China, because China is furious and has already cancelled military deals with the US. अभी परिस्थिति को शांत बनाना है, चाइना और यूएस के बीच में फिर से और एक बार बातचीत बढ़ाना है और शांति का माहौल पैदा करना है. सो ये था हमारा फर्स्ट वाला जो आज का टॉपिक. सेकंड वाला टॉपिक इज बेसिकली एन इकोनॉमिक्स बेस्ड टॉपिक. तो इसको हम देखेंगे बेसिकली इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस, क्योंकि आज के डेट में इन्फ्लेशन हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग चैलेंज एंड इशू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट.
A rate increase was needed to prevent inflation expectations from stymieing growth. Stymie means what? Stymie means to restrict. To restrict. The RBI's Monetary Policy Committee on Friday raised the benchmark interest rate. Benchmark means standard. The benchmark interest rate for a third straight meeting as policymakers battle to rein. Rein means control. R-E-I-N. R-A-I-N नहीं है. R-A-I-N is बारिश. Pronunciation is the same. Rein in inflation that has persistently remained at or above the prescribed upper tolerance threshold for 6 months. Threshold is higher limit. Highest limit. Upper tolerance threshold for 6 months. The 50 basis points raised takes the policy repo rate to 5.4% and more significantly to a level last seen in the pre-pandemic second quarter of fiscal 2019-20, when a growth slowdown and retail inflation of about 3.2% warranted a rate cut. Warranted means asked for. Warranted a rate cut. As the MPC's Jayant Verma had pointed out in June, Monetary Policy Committee's person, when the MPC had recommended a 50 basis point increase, the impact of the 90 basis points total increase from May still left the real policy rate at the time lagging behind the RBI's 100 basis points increase in retail inflation projection for the year from 5.7 to 6.7%. It is only now that the cumulative increase totals 140 basis points and puts the central bank slightly ahead of the curve. These are all technical things जिससे कि ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन कम करना है, अदरवाइज ग्रोथ कम हो जाएगा, एंड पुट्स द सेंट्रल बैंक स्लाइटली अहेड ऑफ द कर्व. अभी सिचुएशन थोड़ा बहुत संभाला है, ठीक ठाक हुआ है. स्टिल, एज गवर्नर शक्तिकांता दास एक्नॉलेज्ड, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, इवन इफ ऑफ April's 8-year high, remains uncomfortably high, with inflationary pressures broad-based. Consumers, inflation जो है वो अभी भी बहुत हाई है, चीज़ों का दाम कम नहीं हो रहा है. And with the MPC's own forecast for the second and the third quarter pegging retail price gains well above the upper tolerance mark. Pegging means arresting, stopping. Pegging retail price gains well above the upper tolerance mark of 6% at 7.1% and 6.4% respectively, the rate setting panel had little option but to continue the withdrawal of monetary accommodation to prevent inflation expectations from getting unmoored and stymied growth by retarding consumption. कंजम्पशन को कम करके
कि इन्फ्लेशन को कम करवाने का ये जो प्रोसेस है, इसको कोशिश जारी है, बट वो करने से और एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमारा ये जो कंज्यूमर का कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन फिर कम हो जाएगा और हमारा मार्केट में पावर नहीं आएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है, राइट, इस टॉपिक का हम समरी कैसे करेंगे? जो फर्स्ट पैराग्राफ है, समरी इज दैट, मैं आपको सिंपल भाषा में इसका समरी करके देता हूं क्योंकि यहां पर बहुत सारे टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं। द RBI Monetary Policy Committee has once again raised the interest rates to stop the inflationary environment the government's aim is to reduce the consumer price inflation that will lead to more consumption and reduction in consumable item prices. So RBI's Monetary Policy Committee has once again raised the interest rates to stop the inflationary environment. The government's aim is to reduce the consumer price inflation that will lead to more consumption and reduction in consumable item prices. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट वो था, पैराग्राफ था। चलिए हम देखते हैं अब सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं। From an external sector and exchange rate perspective as well, globalized inflationary surges are prompting policy tightening in advanced economies that is in turn roiling currency markets, including appreciably weakening the rupee and adding imported inflation to the mix. External sector and exchange rate के हिसाब से हम अगर देखेंगे,
जो ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, are prompting policy tightening in advanced economies that is in the turn roiling currency markets, including appreciably weakening the rupee and adding imported inflation to the mix. तो क्या कर रहे हैं ना, एडवांस इकोनॉमीज में भी राइट रॉयलिंग करेंसी मार्केट्स कर रहे हैं और अप्रिशिएबली वीकनिंग द रूपी, मतलब हमारे रूपी को वीकन कर रहे हैं एंड एडिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन टू द मिक्स. नोटिंग दैट सक्सेसिव शॉक्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी, जो अभी कोविड के लिए हुआ है, अभी सप्लाई चेन के लिए हो रहा है, अभी यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चल रहा है इसके लिए हो रहा है, had led multilateral institutions including the IMF to lower their global growth projections. अभी जो global growth projections था राइट कि इस तरह से दुनिया का डिफरेंट कंट्रीज ग्रो करेगा, उसको लोअर कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं एंड हाईलाइट द राइजिंग रिस्क ऑफ रिसेशन. जो रिसेशन है, जो इकोनॉमी में एक सबसे डेंजरस चीज होता है रिसेशन, उसको हाईलाइट कर रहे हैं राइट एंड हाईलाइटिंग द रिस्क ऑफ रिसेशन. अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन में चल बैठे राइट. मिस्टर दास रिमार्क डिस्क्वाइटिंगली, globalization of inflation is coinciding with deglobalization of trade. बहुत चिंता, बहुत टेंशन के साथ राइट वो क्या कर रहे हैं, दास बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन, इन्फ्लेशन का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है राइट वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, डीग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड. यानी देशों के बीच में जो व्यापार चलता है, जो बिजनेस चलता है, ट्रेड चलता है, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं. रशिया's invasion of Ukraine and the resultant impact on trade flows from the conflict zone have upended means put things upside down. मतलब पूरा उल्टा कर दिया है. Have upended supply chains for several commodities, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया राइट. ट्रेड फ्लोज इंपैक्ट हुआ है राइट, इस देश से उस देश का बिजनेस कम हो गया है राइट. फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन हैव अपएंडेड सप्लाई चेन्स फॉर सेवरल कमोडिटीज, बहुत सारे चीजों का, एंड एडेड टू प्राइस प्रेशर्स फॉर अ रेंज ऑफ गुड्स. आज तेल का दाम, डिफरेंट टाइप्स का एसेंशियल आइटम्स का दाम, ये सारे चीजों का दाम बढ़ गया है. The latest geopolitical tensions triggered in East Asia by US House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan in the face of Beijing's dire warning. Dire means very serious. पहला तो था कोविड, दूसरा यूक्रेन रशिया वॉर जो कि इसके साथ साथ इमीडिएटली स्टार्ट हुआ, तीसरा हो गया आपका रशिया यूक्रेन का लड़ाई, एंड फोर्थ इज अभी चाइना भी भड़क गए हैं बिकॉज ये नैन्सी पेलोसी का जो यूएस हाउस स्पीकर का विजिट जो है, इसके वजह से बीजिंग ने ताइवान को एक बहुत ही ज्यादा कड़ा वार्निंग दिया है. एंड चाइनाज डिसीजन टू रिस्पॉन्स विद एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स. ताइवान से सबसे ज्यादा जहाज जाता है डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए, और वहां पर अगर कोई गड़बड़ शुरू हो जाता है राइट, देन देयर विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द बिजनेस मार्केट. कुड आल्सो इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड, जो मैं बोल रहा हूं, एट अ टाइम व्हेन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क अवर्शन आर ऑलरेडी हाई. एक अनिश्चयता का समय चल रहा है, एक समय चल रहा है जहां पर कुछ भी चीज मतलब निश्चय नहीं है, और यहां पर अगर रिस्क लेना लोग शुरू करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा. मिस्टर दास's कॉन्फिडेंस इन द रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू बाउंस बैक, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम चैलेंजिंग circumstances. Right. तो वो जो है अभी
वो बहुत दास बोल रहे हैं कि हमारे पास वो पावर हैं. Of the economy's fundamentals notwithstanding, it is probably opposite. Opposite means perfect. Probably opposite for the MPC to hereafter heed Mr. Verma's exhortation. Exhortation means strong appeal. By providing projections of the future path of the policy rate. This would help anchor price gain expectations firmly and surely enhance the RBI's inflation fighting credentials. ये एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक था, मगर जो कि एडिटोरियल में है तो इसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी होता है, राइट. तो इसका समरी हम देखते हैं, क्या होगा समरी. The world is going through multiple shocks which are creating tremendous impact on the global economy. The disruption of global supply chain and disturbances in the busiest shipping lane through Taiwan can create havoc in world trade. India can afford to withstand, यानी सहना, this trouble because of strong fundamentals of economy and
domestic consumption. The world is going through multiple shocks which are creating tremendous impact on the global economy. The disturbances in the biggest supply chain, the disruption of global supply chain and the disturbances in the busiest shipping lane through Taiwan can create havoc in world trade. India can afford to withstand this trouble because of strong fundamentals of economy and domestic consumption. तो आज का हमारा जो ये है फिर से हमने शुरू किए हैं, राइट, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होता है. आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ये डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत करिए. वानिक बांग्ला लाइव में, राइट, आपका इसका रिकॉर्डिंग मिलता है, राइट. तो ये यूट्यूब वानिक बांग्ला लाइव का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब करिए और उसमें ये सारे डीएनए आर्टिकल्स अपलोड होके रहता है. आप वहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जो पॉइंट्स नोट करना है वो पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं. तो कभी भी आप कर सकते हैं, इसीलिए डेली इसको फॉलो करते रहिए. यह आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है. मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताना चाहता हूँ. आप खुद देखिए, अपने दोस्त यारों को बोलिए, अपने जो वानिक में दोस्त लोग आपके साथ आते हैं या एक साथ आते हैं उनको भी बोलिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी बिल्डिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेजेस, प्रेसी राइटिंग, ये सब सारे चीज में आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत हेल्प करेगा. इसी के साथ आज आप लोगों को वंस अगेन थैंक यू कहता हूं और आप लोगों से राहुल देव, सीनियर इंग्लिश फैकल्टी, वानिक कोलकाता, विदा लेना चाहता हूं. गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड.